Recording in progress. Okay. Good evening. The persons, those who really attending this webinar, a webinar where I found that classical teaching of homeopathy is going to be considered in a case of old age people, and especially urinary tract. But I have said that we consider some of the old age diseases, especially urinary tract. For urinary tract, I can say that it is the system is going to be involved. But we should consider constitutional prescribing. That should our attitude. Maybe sometime we consider the local symptom. Maybe sometime we consider total symptom. We as a physician who consider the art of prescribing are mostly based on the keynote prescribing. Check about I am saying one thing about considering the old diseases, old people diseases. Thank you, Priya ji. Thank you, Mudrika Prasad Sahab. In my humble opinion, in old age, every system is going to be exhausted. Because age is just like a sundown. Everything is going to be not brightened. So from head to foot, every system is going to be under the consideration in favor of the old age prescribing or geriatric prescribing. Today's topic is especially related to the urinary tract. Among old people, most of the urinary tract carcinoma is very common. Or any part of the carcinoma, but I mostly faces carcinoma of the bladder.
few cases. But prescribing neat characteristic features, prescribing indications. Maybe sometime we consider for old age. I'm going to say about a case of urinary tract, especially related to bladder. Another important factor, which I commonly found in case of the old age people, that is prostatic enlargement, or either malignant or non-malignant. In these two cases, I have found some important homeopathic medicine very helpful. In my very early experience, patient is still alive, near about 10 to 12 years duration. He came to me for the diagnosis in favor of the CA bladder. What I have found in my experience, that you never forget pneumococcinum. Pneumococcinum has a very powerful influence on the bladder. Especially it causes to produce profound weakness in the bladder region. What I need for consideration of prescribing pneumococcinum, one thing as a homeopathic physician, all we us have to consider the symptom, the indications. My humble opinion about pneumococcinum, that this medicine is this medicine is going through the whole history. For the treatment of the carcinoma in the urinary tract or any other tract or any other system of medicine, we as a physician, homeopathic physician, must consider the past. Past is very important because it is going to be capsulated in the present. One more thing which I like to share with you gentlemen, that is primitive history. Past, and we have personal, past and primitive. Now in recent my work to consider the primitive one,
on the basis of the symptomatology, because nobody is going to remember their primitive what the disease is going to be happening. But according to Hahnemann suggestion, when there is a cause, there is a certain effect, a relation between the cause and effect. Philosophy of the cause and effect, sometimes very helpful to consider prescribing. As a teacher in different colleges, especially National Institute of Homeopathy, I used to taught cause and effects relation, its philosophy, and its use and misuse in homeopathic prescribing. Nowadays, with my experience, the past and primitive, we forget. It's very difficult to consider primitive 2 or 3 generations. Very difficult. Then what is the part? The symptom. Most of these bladder cases, cancer cases, I give a series of symptoms. And this series of symptoms I noted in favor of pneumococcal prescribing. Either in the patients, a severe, profound influence of pneumococcal, or in the family. It should be our reach to consider. But for primitive, we're going to consider with the effects. What is the effects for consideration of the pneumococcal prescribing? 1, patient has got a severe and long-lasting recurrent pneumococcal infection. 2, the effect is going to be considered. Consequently, patient is going to become very susceptible to cold. This susceptibility to cold in the family, from the primitive history, आपके पिताजी में मिलेगा, आपके दादाजी जी में मिलेगा. ये बात बिल्कुल साबित हो जाएगी कि इतना लोगों में, पेशेंट के फादर में, पेशेंट के दादा में, उसकी ग्रैंड मदर में ऐसी हिस्ट्री बहुत सारे मिलते हैं. पेशेंट बहुत ससेप्टेबल टू cold. We जल्दी consider maybe due to the tuberculosis. No. There are many different issues also. Among them, there are no history of tuberculosis. Maybe tuberculosis is going to be developed after pneumococcal infection. Before consideration of the pneumococcinum for bladder, we watch the family history. In the family history, we have the bladder is very weak in father, in grandfather. Patient having uncontrolled urinary effort, पेशाब जल्दी नहीं रोक पाते. उसके पिताजी में, उसके दादा में. लेकिन पेशेंट के अंदर carcinoma develop because the weakness of the bladder as a primitive indications that the family is going to be ruined with the approach of carcinoma. हम लोगों को पहले ही इस बात को दिमाग में मार्क कर लेना चाहिए कि
जिसके फैमिली में ब्लैडर कॉन्स्टेंटली इफेक्टेड है, एक दो जनरेशन को तो हम लोग पकड़ लेते हैं, तो वहां से फिर हम एनालॉजिकली कंसीडर करते हैं कि इनका ये 2 जनरेशन 3 जनरेशन ब्लैडर के वीकनेस को आ रहा है। तो ऐसे हालत में हम लोगों को ये अज्यूम करना चाहिए कि मे भी न्यूमोकोकिन का हिस्ट्री, न्यूमोकोकिन इन्फेक्शन का हिस्ट्री आगे भी होगा, लेकिन ये अज्यूम है। हम इसको कंसीडर करते हैं किससे? सिम्टम्स और उसके इफेक्ट्स। मैंने अपनी जिंदगी में जो थोड़ा बहुत इसको कंसीडर किया है, ये सीक्वेंस के साथ, weakness of the bladder in grandfather, maybe prior to that, and father, and the patient is going to develop carcinoma in the bladder. Still, patient is very susceptible to cold. And one thing was very clinical to me, that mostly people have constipation with a mild taste of sweets in the mouth. बस इतना मुझको अगर कार्सिनोमा ब्लैडर के केसेस में अगर मिलता है तो आई कंसीडर न्यूमोकोकिनम LM1। अगर इस्टेब्लिश हो गया है, थोड़ा वर्स कंडीशन में है, तो 3 आवरली देते हैं और कब बढ़ाने के लिए कहते हैं। बीच बीच में कुछ एक्यूट सिम्टम डेवलप होते हैं, अकॉर्डिंग टू सिम्टोमोलॉजी उसको देंगे। जैसे एक कम यूज करते हैं लोग मेडिसिन, उसका नाम है पॉपुलस टी, बोरिक में मिल जाएगा आप। उस पर सिम्टम क्या होता है? ये ब्लैडर का हिस्सा है, इसके ठीक ब्लैडर वाली जगह पे बाहर से पेशेंट बोलेगा उंगली से, यहाँ दर्द बहुत होता है, बार बार यही दर्द होता रहे। एक एरिया में उंगली के साथ अगर, ऐसा बहुत केसेस में मैंने देखा है, तो ऐसे में इस एक्यूट पेन एज अ सीक्वेंस ऑफ ब्लैडर कार्सिनोमा, पॉपुलस टी आई गिव, लोअर पोटेंसी में 6 में 30 में तो लेते हैं। उससे जो एक्यूट कंप्लेन होता है पेशेंट, वो फ्यू डोजेस के बाद कम हो जाता है। And patient, this is also a part of a demand of a patient constitution to take help with some of the rare medicine. As I told repeatedly, the rare medicine I use rarely, not I. It should be considered as a rarely used. When is going to be, should be used when the symptom is going to be persist and long not going to be removed, palliate by your constitutional medicine. So in a case of the pneumococcinum prescribing, sometimes I found the patient has got a severe pain which can be covered by the tip of the finger on the pubic area. And a few doses of Populus tea will help me a lot. But like कभी कुछ और केस में थोड़ा सा फीवर आ जाता है, एकोनाइट, बेलाडोना, ब्राइन या जैसे सिम्टम कभी कभी डेवलप हो जाता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है। अभी एक कॉस केस चल रहा है मेरा, वो आज आया था, रिपोर्टिंग बहुत अच्छी हुई है। 1 महीना पहले मैंने देखा था उसको, वो सीए ब्लैडर, सस्पेक्टेड सीए ब्लैडर, क्योंकि पेशाब के रास्ते से उसकी ब्लीडिंग हो रही थी। उसका एक बच्चा सीए लंग्स में मर चुका है थोड़े दिनों पहले, 1 साल पहले वो आया था। हमने मना किया था कि ज्यादा छेड़छाड़ मत करो,
लेकिन वो नहीं माना। नहीं माना वो क्या कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंसिस्ट करते हैं, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, आप बेटर हो, आप एक बार इसकी केमोथेरापी करा दो, इसकी बायोप्सी करा दो, ये करा दो, जैसे मुंह वैसे मशवरे। और बेचारा जो विक्टिम होता है वो फंस जाता है। फंस जाने की वजह से पेशेंट बहुत सफर करता है और उसका बेटा मर जाता है। हमने उसको कहा भी था कि देखो तुम्हारे फैमिली में जो हम देख रहे हैं, कार्सिनोमा एक डोमिनेटिंग फैक्टर है। और ऐसा ही हुआ। पूरे 1 डेढ़ 2 साल के बाद जब वो आया हमारे पास, खुद अपना पेशेंट अपना पेन लेके आया, अपना तकलीफ। भी अरकम आएगा तो हम पूछ के बताएंगे, शायद मैंने उसको फास्फोरस दिया। तो ये भी प्रेजुडिस मत रखिए कि न्यूमोकॉकन ही हम देंगे। मलेरिया ऑफिशियल नहीं, सॉरी सॉरी, थैंक यू। उस केस में शायद मैंने मलेरिया ऑफिशियलिस दिया है। और जब वो 1 महीने के बाद आया है पेशेंट आज मेरे पास, तो 75% ब्लीडिंग उसका खत्म हो चुका है, हल्का रेडिश शार्प। पेशेंट बहुत चेयरफुल था। ब्लीडिंग एकदम नहीं के बराबर आ रहा है, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन था वो कम हो गया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन था वो कम हो गया है, ओवरऑल पीएसए नॉर्मल। हाँ 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 सर, पीएसए नॉर्मल। ये रिव्यू आज आया है और बहुत सेटिस्फैक्टरी रिव्यू था। कार्सिनोमा के केसेस में 3 चीज हम देखते हैं। पहला, पैथोलॉजी की क्या कंडीशन है। नंबर 2, पेशेंट की भूख कैसी है। नंबर 3, नींद कैसा है। चौथा भी देखते हैं, वो उसकी जो वेलबींग, क्या बोलते हैं, वेलबींग, एज, जो वेट है वो बढ़ा है, वो कमना नहीं चाहिए। कमने से एक मेरे में ये 4 फैक्टर मैंने बताया। भूख का अच्छा लगना, नींद का अच्छा, वेल बीइंग बहुत अच्छा फीलिंग करना, और वेट थोड़ा इंक्रीज करना। इसमें कुछ अगर गड़बड़ होता है तो हम कंसीडर करते हैं कि बैड प्रोग्नोसिस। गुड प्रोग्नोसिस कार्सिनोमा के केसेस में स्किन इरप्शन बाहर आ जाता बस, और ओल्ड सिम्टम रिटर्न हो जाना हेयरिंग्स लॉ के मुताबिक। और पेशेंट, उसका चेहरा इतना मुस्कुराता, इतना खुशी खुशी आया। ये आपको मैंने मलेरिया ऑफिशियल की प्रिस्क्राइबिंग, मैंने उस केस में उसका रिकरेंट मलेरियल इन्फेक्शन था, और वो जहां रहता है वो मलेरिया प्रोन इलाका है। मलेरिया ऑफिशियल के प्रिस्क्राइबिंग के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखते हैं जिस मोहल्ले में, जिस इलाके में, जिस सिटी में वो रहता है, वो मलेरिया प्रोन इलाका है। ये 2 मेडिसिन, वन नट्रम्यू, अनदर इज मलेरिया ऑफिशियल। एंड दूसरा फैक्टर क्या देखते हैं कि अगर मलेरिया प्रोन इलाका है तो कितनी बार मलेरिया हुआ है और कितना ड्यूरेशन रहा है, क्या ट्रीटमेंट रहा। इस केस में भी इतने बार मलेरिया उसको हुआ। और जब ये मलेरिया की हिस्ट्री मिल जाती है तो मैं ये कोशिश करता हूं कि जो प्रूविंग है मलेरिया ऑफिशियल का, उसको एक बार जरूर देख लेंगे। मेरे हिसाब से जिस आदमी का कॉन्स्टिट्यूशन ट्यूबरकुलर होगा, वो आदमी बहुत मलेरिया प्रोन होता है। पहले तो इलाका देखा, दूसरा पर्सनालिटी देखी, उसके फैमिली हिस्ट्री कंसीडर करते हैं हम लोग। जहां एक तरफ न्यूमोकॉकिंग के लिए न्यूमोकॉकल इन्फेक्शन रिकरेंट है, ठीक उसी तरह मलेरिया ऑफिनिशन प्रिस्क्राइब करने के लिए रिकरेंट एंड सीवियर डीप
सप्रेशन ऑफ मलेरिया, ये एक हिस्ट्री मिलता है। उसके बाद मलेरिया ऑफिशियल्स के लिए प्रिस्क्राइबिंग करने के लिए जो हम सोचते हैं वो आलू बहुत पसंद है। आलू उसके एक पार्ट का एक बहुत ही पावरफुल फूड है, हर चीज में वो आलू चाहे। और बंगाल में तो ऐसा होता है कि यहाँ बिरयानी में भी लोग आलू खाते हैं। ये भी हो सकता है। ये बंगाल जो है वो बहुत मलेरिया प्रोन स्टेट है, शायद इसी वजह से ऐसे केसेस मिलते हैं। तो उसमें हमने जो देखा ये दो, और तीसरा देखते हैं वो उसको बिफ मीट जो है बहुत शौक से खाते। बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि वो बिना मीट के रह ही नहीं सकता। एक केस मुझको याद पड़ता है जिसके अंदर वो पेशेंट इतना क्रेजी रहता है मीट के लिए, स्पेशली बीफ के लिए, तो कभी कभी पकाने से पहले भी खाता रहता है कच्चा। जब हम लोग इस बात पे समझ लेते हैं कि ये पेशेंट जो है मलेरिया ऑफिशियलिस का है, तो इसके लिए वट एवर मे बी द नेम ऑफ द फर्स्ट recurrent and deep-seated infections of the malaria treated allopathically. One. Number two, she or he having a survival in malaria-prone ilaka, region, state, city, village, etc. दो के बाद फिर आलू वाली बात, और तीसरे में चौथे में फिर बिफ का डिजायर। यहाँ पर थोड़ा कभी कभी हमको कंफ्यूजन होता है, and that confusion maybe is going to be overcome by the whole analysis of the case. Must have meat, calcaria cow. Must have meat, not food. Must have meat, statistically. Must have meat, sulfur. Now, especially in the must have meat, you must have beef. Especially malaria-prone personality with the tubercular history, tubercular type history. I consider patient in favor of malaria officer. इसी तरह नीमोकॉक्किंग के बारे में मैंने कहा, मुंह में थोड़ा थोड़ा स्वीटेस्ट टेस्ट, सीवियर कॉन्स्टिपेशन, recurrent attack of malaria suppressed by allopathic medicine, or followed by patient who is going to be very susceptible to cold, and that cold followed by a weakness of the blood, a profound weakness of the bladder. Weak bladder means carcinoma. And my experience taught me, by this indication, I have got wonderful result with pneumococcal. These two medicine, especially in old ages cases, I found very successful in urinary tract. We have some medicine like weakness of the bladder related with prostatic enlargement. But this should be always considered the patient have
Oral history shows the sequences in favor of pneumococci, in favor of malaria or any other. बीच बीच में कभी कभी मुझको मिला है पॉपुलस टीका, बहुत मुझको मदद करता है, बहुत हेल्प करता है। बहुत सारे मेडिसिन जो जो अभी सक्सेस मेरे नजरों के सामने जो केसेस थे वो मैंने आपसे डिस्कस किया है। I hope that the way which I consider pneumococci, consider malaria facility is very clear to you. And I hope too in future that you people also going to be considered with the history, anamnesis, primitive, past and personal history. It's a much, much important factor in आजकल मेरा ये इस पर रिसर्च चल रहा है। आईसी काम कर बहुत जबरदस्त, आर्मी का बहुत जबरदस्त काम कर, एक बहुत इसमें मेरा हम कंसीडर करेंगे ये माय नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, especially primitive medicine, give me a lot of clue for homeopathic prescribing. Thank you, my friend. I welcome to all of you to know about, to learning effort. I appreciate you. God bless you. Namaskar.